This is Yogesh Kumar Garg, clear India Forest Service Examination 2019. I have scored 210 marks in the interview. Here, through daily knowledge track and learning with officer, I will deliver lecture on polity. In this lecture, I will go topic by topic. I will start with the quotation and end with the previous year question answer that come in pre-examination and mains examination. I will dis- discuss about legal right and judicial review. Before starting this lecture, quote of the day is अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जलाओ by Benjamin Franklin. It is better to light a candle to move away the darkness. Legal right. ये we can divide into two type, constitutional right and non-constitutional right. Non-constitutional right को हम statutory right भी कहते हैं. Then constitutional right can again be divided into two parts, fundamental right and other right. जो फंडामेंटल में राइट में नहीं है दे आर नोन एज अदर राइट, जैसे कि राइट नॉट टू बी टैक्स अंडर आर्टिकल 265, देन राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300, राइट टू ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अंडर आर्टिकल 301, राइट टू एडल्ट सफरेज अंडर आर्टिकल 326. आर्टिकल 12 में हम स्टेट की डेफिनेशन को बताया गया है कि फॉर द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट व्हाट state include. It include government and parliament, state government and legislative houses of that state, and or local and other authority that come under the government of India or within the territory of India. Now non-constitutional right के हम एग्जांपल देखते हैं. Right to seek information, right to enforcement of contract, right to transfer property, right to marriage, right to adopt children, and many others. Now we come to judicial review and fundamental right. Judicial review जो हमारा हायर जुडिशरी है, they can declare any law as unconstitutional and void if the provision of that law violate of the constitution or fundamental right. इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है. दिस इज द कॉन्सेप्ट जो यूएस में ओरिजिनेट हुआ था. ये implicit mention under article 32 writ, then under article 226, and it explicitly mentioned under article 13.2 of the fundamental right. It is stated that to the extent of that inconsistency, any law that violate the fundamental right should be null and void. So for judicial review हम तीन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं. फर्स्ट इज अगर किसी भी लॉ का दो इंटरप्रिटेशन, जो इंटरप्रिटेशन वैलिडेट करे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो हम उस लॉ या उस स्टेटमेंट या उस एक्ट को प्रीफर करेंगे. इफ इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो वी कैन डिक्लेयर दैट एक्ट एज ए नल एंड वॉइड. सेकंड की दैट लॉ शुड बी लीगल एंड फोर्सेबल होना चाहिए. एंड थर्ड की वे शो मोटो नहीं होना चाहिए. देन इन केशवानंद एंड भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, जुडिशियल रिव्यू डिक्लेयर एज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देन उसी टाइम अदर चीजें भी they are declared as the part of the basic structure. First one is balance among three organ of the state, that is legislative, executive, and judiciary. Second is separation of power, fundamental right and directive principle of state policy, federalism. Fifth one is protection of fundamental right. Sixth one is protect undue encroachment by legislative and executive. Seventh is doctrine of limited government.
come for the previous year question. 2017 में एक क्वेश्चन आया था, राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया is fundamental right, natural right, constitutional right, or legal right? Write your answer in the comment box. The highly debated question. Most of the people go for fundamental right. Some are go for most of the people go for the constitutional right, and many are also claiming that it is the legal right. जब यूपीएससी का की आया, they declare it as a constitutional right. Thanking you.